with that, we've come to the end of day 2 of Qatar 2022. What an exciting day, particularly if you're a Three Lions fan. England की तो कमाल की शुरुआत रही है. Not so for Asian opponents, क्योंकि कतर के साथ क्या हुआ पहले दिन पे आपको पता है और ईरान ने भी 6 गोल खा लिए. Now it's the time of Saudi Arabia, which means we're looking ahead to day 3, where Messi and Argentina will be in action up against Saudi Arabia. To kickstart proceedings on day 3, उसके बाद आपको दिखेंगे Denmark in action. Christian Eriksen याद है 18 महीने पहले he had that horrific cardiac arrest. He's back on the field and I'm sure the Danes will rally around him as they take on Tunisia today. And then it's the turn of Lewandowski. All you Lewandowski fans, he'll be in action against Mexico. Very tough challenge to begin with for them before finally we will see the defending champions on the field once again. No Pogba, no Kante, no Nkunku and no Karim Benzema. How will they fare this time around? Do they have enough reserves to dig into to be able to produce a performance and kickstart their campaign in style? यानी कि डे 3 का प्रीव्यू तैयार हो चुका है. आप देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं. So Messi's 5th World Cup is about to start, right? So it's only fitting कि हम उनसे शुरुआत करें. 2014 का विश्व कप फाइनल याद कीजिए when he was holding the Golden Ball trophy for the best player of the World Cup, but it's really the other trophy that he wanted. और वो आई नहीं. लेकिन जो उसके बाद आया है वो बहुत ही जबरदस्त है और वो सुनने लायक भी है. Because Argentina now under Lionel Scaloni, their manager, is a completely renewed force. काफ़ी सारे ऐसे एक्स प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे इस टीम में और उनको बाहर कर दिया गया है. And what Lionel Scaloni has done beautifully as he's got a lot of young players जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. But just a bit on Argentina before that, they are currently on an unbeaten run जहाँ पे अगर वो ग्रुप स्टेजेस में अनबीटन जाते हैं तो they will create a new world record, which tells you that they had a near flawless qualifying campaign, and this is a completely different side to a side that was almost used to losing in finals, because this is the first time that Argentina are going into the World Cup since 1994 where they are Copa America champions. एक इतना लंबा इंतजार जो कि खत्म हुआ उस कोपा अमेरिका ट्रॉफी के साथ, जो कि तब आई जब उन्होंने ब्राजील को हराया एक फाइनल में, ब्राजील के ही घर पे, द होम ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल में. तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, एंड इन अ वे अ मंकी ऑफ द बैक, राइट? बिकॉज a lot of people said Lionel Messi has done everything in the game in terms of his personal achievement, but what has he really done for the country? Well, now those doubts have been put to bed. Now it's all about the World Cup. अगर आप एक इमेज इमेजिन करें कि उन्होंने सारी ट्रॉफीज जीती हो, बैलन डोर हो या ला लीगा हो या चैंपियंस लीग हो या फिर अब तो फ्रांस की टॉप डिवीजन की ट्रॉफी क्यों ना हो, बट अगर बीच में अगर आप उनका एक montage बनाए, that one trophy that is missing, it's obviously the World Cup. So let's talk a little bit about Lionel Messi. Now, Lionel Messi obviously has played in enough World Cups. The one criticism of Lionel Messi's play is that उन्होंने knockout stages में assist तो बतेरे दिए हैं, but goal अभी तक नहीं मारा है. So something happens to him after the group stages which he would like to correct. What he will benefit from is two things in particular according to me. Number one is the fact that PSG के साथ खेलते हुए उनका फॉर्म जबरदस्त है. हम अर्लिंग हालैंड की बात करते हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग में उपलब्धियां जो हैं कलेक्ट करने की एक आदत सी बना ली है. लियोनेल मेसी इज राइट अप देयर विद अर्लिंग हालैंड इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन प्लेयर्स who are doing absolutely phenomenally in the league. यानी कि लियोनेल मेसी इस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं एक बेहतरीन फॉर्म के साथ. The second thing that will really benefit Lionel Messi and make his dream of winning the World Cup a reality perhaps is that Lionel Scaloni, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स को अब इस स्क्वाड में ब्लेंड इन कर लिया है, जिसकी वजह से आई थिंक मेसी के लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशंस ऑफ द वर्ल्ड कप और प्रीवियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स that Argentina have been a part of. Let's talk about a few of those players that you should watch out for today. And we'll begin in goal for Argentina. Emiliano Martinez की कहानी जो है वो अद्भुत है. It's a beautiful story, right? In 2010, he joined Arsenal and for about 10 years he didn't really get opportunities because 6 बार तो उनको लोन पे भेजा गया अलग अलग क्लब्स में, और उसके बाद 2020 में बर्न लेनो जो कि आर्सेनल के नंबर 1 गोलकीपर थे, उनको इंजरी आई. एफए कप फाइनल में आर्सेनल खेल रही थी और एमिलियानो मार्टिनेज को मौका मिला और उन्होंने एफए कप लगभग सिंगल हैंडेडली फाइनल में आर्सेनल को जिताया. And from there on began a journey which now Emiliano Martinez will look back at with a lot of pride and we'll be really delighted with that because न केवल वो आर्सेनल के बाद फिर एस्टन विला गए, उनको एक बड़ी राशि में वहां पे खरीदा गया, पर उसके साथ साथ धीरे धीरे while Argentina was looking for a number 1 goalkeeper, he managed to cement his place as the number 1. And Lionel Messi ने खुद उनकी इतनी तारीफ की कोपा अमेरिका फाइनल जीतने के बाद, तो बताता है कि this guy is pretty special. And a few more players that have been added to the squad or have found a regular place in the squad have to be talked about. Romero in defense, for example. Another journeyman footballer. Romero
की कहानी आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि एक टाइम पे दिस गाय ऑलमोस्ट वांटेड टू लीव फुटबॉल. ही वाज अप्लाइंग हिज ट्रेड फॉर डिफरेंट क्लब्स इन इटली. जेनोआ गए इटली में, वहां से फिर यूवेंटस की नजर उन पे गई, फिर यूवेंटस ने वापस उनको लोन पे जेनोआ भेजा. देन दे सेंट हिम टू अटलांटा. Eventually, he reached a quarterfinal in the Champions League with them, and then finally in Lionel Scaloni's side, he became a regular. He's somebody who can really command that defense. He can carry the ball. He's almost like their last line of defense before Emiliano Martinez is in goal. So watch out for Romero. Going slightly forward in that on that pitch for Argentina will be Rodrigo de Paul. What a fabulous player he is. I mean, there's a lot of talent in Argentina, right? हम जानते हैं कि like Brazil, this country also eats, sleeps and breathes football. So the likes of Paredes come to mind, Lo Celso come to mind. लेकिन ये बंदा जो है ना, रोड्रिगो पॉल, इस पे अपनी नज़र रखिएगा. Still very young, started off as an attacking midfielder, almost in that number 10 role जो कि striker के ठीक पीछे खेलता है. लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी that ability to shield the defense जो उन्होंने दिखाई, उसके बाद he's just become absolutely undroppable in Lionel Scaloni's side. So Rodrigo de Paul, Emiliano Martinez, obviously Lionel Messi के साथ साथ एनहेल डी मरिया पे नज़र रखिएगा. कोपा अमेरिका फाइनल की मैंने बात की, जिससे फाइनली 1993 के बाद अपना एक ट्रॉफी का इंतजार अर्जेंटीना ने ख़त्म किया. उसमें विनर दागा था Angel Di Maria ne. He's a player for the big occasion, and to score a winner for Argentina in the home of Brazilian football, I think the first Argentinian player to score in a final like that since Gabriel Batistuta the great. Angel Di Maria is capable of big things on the biggest stage, और वर्ल्ड कप से बड़ा कोई स्टेज नहीं है. लियोनेल मेसी की मदद करने वाला एक और खिलाड़ी, another very young guy in Lautaro Martinez. He is underrated. I'll tell you why, because he's almost like the first line of defense for Lionel Scaloni's side. है वो अटैकर, लेकिन वो जब अर्जेंटीना को डिफेंस में जाती है तो ऑलमोस्ट वो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं. द अदर थिंग मार्टिनेज डज ब्यूटिफुली इज दैट लियोनेल मेसी अब भाई वो 25 साल का लड़का नहीं रहा है जो कि कट करके निकल जाता था. नाउ ही इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर. ऑब्वियसली ही हैज गॉट टू सेव हिज स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बिकॉज ही हैज गॉट टू प्ले आउट द 90 मिनट्स एंड इंस्पायर हिज टीम. Martinez does the hard yards. He does the running that makes Lionel Messi's job a lot easier. So watch out for these 4-5 players that I've pointed out to you, apart from obviously the great man Lionel Messi. Their challenge begins with Saudi Arabia, possibly one of the easiest opponents they could have began with, क्योंकि आप याद करें तो पिछला विश्व कप जब शुरू हुआ था तो सऊदी अरेबिया ने मुंह की खाई थी रशिया से. I'm not expecting a very different result as far as Argentina's game against Saudi Arabia is concerned. There'll be bigger challenges to come because इसी ग्रुप में मेक्सिको भी है, इसी ग्रुप में लेवेंडोव्स्की की पोलैंड भी है. यानी कि आज मेसी की अर्जेंटीना को एक बेहतरीन शुरुआत देने का बेहतरीन मौका है. And finally, it's time for the defending champions France to finally appear in this World Cup. थोड़ा सा दिन लगे लेकिन फ्रांस आज दिख ही जाएंगे. थोड़ा सा लेट किक ऑफ है तो आप अगर रात तक जाग रहे हैं तो आप हमें देख सकते हैं हमारे शो पे, जिसमें रॉबर्ट पेरेज हो गए और उनसे फ्रांस के बारे में बात करने में मजा आएगा because he's been a World Cup winner with France. But apart from that, the reason why I'm really looking out for this French side is because of two reasons. Number one, 1962 was the last time any country managed to defend their World Cup crown. यानी कि 60 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई ऐसी कंट्री आई नहीं है जिसने एक साल वर्ल्ड कप जीता और फिर 4 साल बाद उसको डिफेंड किया. ब्राजील वाज द लास्ट टीम टू डू इट. कैन द फ्रेंच डू इट? You know what? 2 महीने पहले आप ये बात पूछते तो मैं कहता definitely, because that squad has not really aged, right? I mean, they've gotten even more experience from the team that won the World Cup. Kylian Mbappe was only the second teenager to score in a World Cup final जब उन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट वो फेमस गोल मारा था और फ्रांस ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी. Now he's even more experienced. Now he's even more sought after by different clubs around the world. नहीं, रियल मैड्रिड की बात मैं नहीं करूंगा. But Kylian Mbappe तो एक अच्छी खबर है. The bad news just keeps coming for France. They lost Paul Pogba. I'm sure you guys know Paul Pogba. Even before the tournament, N'Golo Kante, for all you Chelsea fans, lost N'Golo Kante to injury. Two very important cogs in the wheel for that French team. I know they've got the likes of Camavinga and Tchouaméni जो कि Real Madrid के लिए खेलते हैं, but they're not Paul Pogba and N'Golo Kante जो कि French team के लिए एक trusted war horses रहे हैं, right? So that's a big miss. उसके बाद ट्रेनिंग का एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले और एनकुंकू भी injured हो गए. One of the guys who was supposed to lead their attack. Then the biggest blow came, and that is Karim Benzema, who's just been awarded the Ballon d'Or and obviously won the Champions League once again with Real Madrid. In fact, captained them to that Champions League title, and of course scored in the El Clasico, जो आपने शायद देखा हो. He's not there. So these 4 huge misses, huge holes to fill for Didier Deschamps. So how are France going to defend their title? Well, we'll get to know tonight if they start well against Australia. फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हमेशा एक थोड़ी सी जोग्राफिकल राइवलरी रहती है, कल्चरल राइवलरी रहती है. इंग्लैंड ने तो भाई साहब कल दिखा दिया दैट देव गॉट द वेयर विद ऑल, राइट? आई नो दैट दे ओनली बीट ईरान,
but at the end of the day, you still got to beat them. And England didn't just beat them, they beat them by a margin of 6-2, which tells you that goal difference was also on their mind, and they've given opportunities to a lot of people. Now, the French would have watched this, and they would look at England as direct competitors or direct rivals or contenders for that World Cup title. So they would want to start on a canter as well. I think they shouldn't get too ahead of themselves. They should just look to get past the Australia challenge, which should, in my opinion, be the easier challenge, because उसके बाद उन्हें Denmark से भी भिड़ना है और Tunisia से भी भिड़ना है. So it's not going to be easy. So I'm expecting the French to get past this hurdle, but how they'll cope with the absentees and the injuries is a question that I would love to see the answer for today. जो तीसरा मैच है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा. उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिस पे आप शायद अपनी नज़र रखिएगा. Of course, मेक्सिको और पोलैंड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसका मैच खेला जाएगा स्टेडियम 974 में. 974 की अच्छी कहानी है. 974 उसका नाम इसलिए रखा गया बिकॉज 974 शिपिंग कंटेनर्स को यूज करके इस स्टेडियम की स्थापना की गई है. इट हैज बीन बिल्ट यूजिंग 974 शिपिंग कंटेनर्स. एंड देयर इज दिस थिंग इन कतर इन दिस वर्ल्ड कप व्हिच इज द सुप्रीम कमिटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी, जो उनका लेगेसी वाला एस्पेक्ट है, which tells you that some of these stadiums will be dismantled fully or partially, and they will be used to build stadiums in some of the emerging and developing countries. So a noble gesture from that point, given the fact that World Cup इतने controversial circumstances में खेला जा रहा है. So apart from the stadium, the one man you want to watch in that stadium is Robert Lewandowski, right? Because Bayern Munich के लिए तो उन्होंने बहुत जौहर दिखाया. He played some incredible football, scored lots of goals, and right up there with Gerd Müller, one of the German greats in terms of scoring in the Bundesliga, the top division of Germany. Since he's moved to Barcelona, people have been asking, is he really the right man to lead the line for them? But he's banged in the goals. But Barcelona में standard इतने high हैं कि आप कितने भी मार दीजिए, आपका comparison हमेशा लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ियों से होगा, नेमार से होगा, back in the day वो पुराने वाले लुइस सुआरेस से होगा, जो कि काफ़ी दशक पहले खेलते थे. So a lot of greats in which against whom he has to compete, but let alone his form. It's about Poland for him, right? He's the captain of the side. He's going to be leading them out today against a very strong and very cohesive unit in Mexico. And they're in a group with Argentina, Lionel Messi's Argentina, and Saudi Arabia. So today is almost like a 6-pointer for Lewandowski and Poland. He's a different beast for club and a completely different player for country. But one thing that he always provides is goals. So watch out for Lewandowski in that game between Mexico and Poland. The other game that I'm really looking out for is Denmark versus Tunisia. Now you'll say, Denmark? Tunisia? हमने बात की थी इंग्लैंड के प्रीव्यू में कि इंग्लैंड का क्वालिफाइंग कैंपेन कितना अच्छा रहा था, लेकिन सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनका क्वालिफाइंग कैंपेन इंग्लैंड से भी बेहतर रहा था इन टर्म्स ऑफ विन्स. वन वाज जर्मनी, द अदर वन वाज डेनमार्क. वेरी अंडररेटेड साइड. मैंने अपने अंडरडॉग्स के प्रीव्यू में भी उनका नाम लिया था बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ टीम दैट देयर कोच हैज बिल्ट. नाउ डेनमार्क काफी सारे कारणों से आप उनकी फुटबॉल देखना चाहेंगे, बट द वन थिंग दैट आई विल अर्ज यू टू वॉच इन दिस गेम is Christian Eriksen. Another fabulous story. And since this preview has been about stories from Argentina and football in general, I've got to talk to you about Christian Eriksen. Cut to the European Championships or the Euros 2020, या यूं कहें कि 2021, क्योंकि कोविड की वजह से 2021 में खेला गया था. एंड डेनमार्क मेड इट ऑल द वे टू द सेमीफाइनल. लेकिन उससे पहले जब वो फिनलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेजेस में खेल रहे थे, तो क्रिस्टियन एरिक्सन, जो कि उनके इंस्पिरेशनल मिडफील्डर हैं, उनको आया था एक कार्डियक अरेस्ट. एंड आई मीन इट वाज हॉरिफिक, इट वाज ट्रैजिक ऑलमोस्ट. एंड लॉट ऑफ पीपल थॉट वो कभी दोबारा शायद फुटबॉल ही ना खेल पाए. बट गेस व्हाट हैपेंस, ही डजंट जस्ट कम बैक टू प्ले फुटबॉल, ही गोज ऑन टू देन इवेंचुअली साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड नाउ ही इज बैक. एंड आई हैव अ फीलिंग दैट डेनमार्क जिस तरह के फॉर्म में इस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, एंड जिस तरीके से क्रिस्टियन एरिक्सन की ये स्टोरी डेवलप हुई है, जहां पे कार्डियक अरेस्ट के 18 महीने बाद ही इज बैक टू प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव अ फीलिंग दैट दिस टीम विल रियली रैली अराउंड हिम. एंड रियली वॉच आउट फॉर डेनमार्क बिकॉज दे आर इन अ ग्रुप with France and Australia, and of course Tunisia, who they start their campaign against today, and they cannot be taken lightly because they're a team of brothers who are playing together, and especially after that Eriksen incident, it seems like the bond between all the players has just even grown stronger. So watch out for Christian Eriksen and Denmark today. So which player are you really looking out for today? Messi? I know most of you will pick Messi, but apart from that, is there Lewandowski in your list? Perhaps Kylian Mbappe? Maybe Christian Eriksen? We've spoken about a lot of players today, so let us know in the comments below which player are you keeping an eye out for mostly today. And why not give us a scoreline predictions as well for all the 4 games, starting with Argentina and Saudi Arabia. थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, अभी तक एशियन अपोनेंट्स ने कुछ खास नहीं किया है. कतर होस्ट हैं लेकिन आसानी से पहला मैच हार गए. ईरान को तो मुंह की खानी पड़ी. दे लॉस्ट रियली बैडली टू इंग्लैंड एज वेल. विल सऊदी अरेबिया represent Asia slightly better than the other 2 countries? Let us know. Give us a scoreline and maybe give us some goal scorers. Who are you expecting to see score some goals today? And that should make for some
fun reading and listening. उम्मीद है कि आपको डे 3 का प्रीव्यू पसंद आया। चलिए अब डे 4 की तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले डे 3 के मैचेस आप एंजॉय कर सकते हैं इफ यू लॉग ऑन टू द स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क और डाउनलोड द जियो सिनेमा ऐप। तो डे 4 विल ब्रिंग यू अ होल लॉट मोर। अंटिल देन, गुड बाय।